Hello friends, welcome to CIZ. Today I am here with some important current affairs of national and international importance of the October 2019 months, which is very important from the Prelims paper 1 of General Studies and Engineering Aptitude of Engineering and Services Examination 2020. These are the top-notch current affairs of October 2019. Let us start with the series of current affairs. Let us start with the series of current affairs. So the first current affair of October 2019 month that we have is of second India-China informal summit. जैसे आप मेरे पीछे दे सकते हैं, this is the picture of Mamlapuram that was taken in the October month of 2019, where Indian Prime Minister Mr. Narendra Modi and the Chinese President Xi Jinping, they both had the informal summit. Friends, 2018 के अंदर चाइना के अंदर एक शहर है वुहान, तो वहाँ पे इंडिया और चाइना के लीडर्स, द सेम लीडर्स वर देयर, और दोनों के बीच में वहाँ पे एक इनफॉर्मल समिट हुआ था. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल समिट्स. जो फॉर्मल समिट होते हैं, जैसे आपका ब्रिक्स हो गया, G7 हो गया, ये सारे आपके फॉर्मल समिट्स होते हैं. इसमें ना कोई थीम, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं डिस्कशन के लिए, वो सब पहले ही क्लियर होते हैं. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द इनफॉर्मल समिट्स के अंदर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट इशूज़ जो टॉपिक्स होते हैं कंट्रीज़ के आपस में रिलेशंस के, वो क्लियर नहीं होते हैं. इनफॉर्मल समिट में वॉट एवर डायलॉग दैट हैपन्स, दैट इज़ ऑन द इनफॉर्मल लेवल बिटवीन द लीडर्स. यूजुअली डिस्कशन के अंदर जो मेन इश्यूज़ हैं वो डिस्कस कर लिए जाते हैं, बट एज पर द क्राइटेरिया ऑफ फॉर्मल समिट, इन इनफॉर्मल समिट देर इज़ नो प्रॉपर डेकोरम दैट इज़ फॉलोड. सो 2019 के अंदर अक्टूबर महीने के अंदर both of the leaders they were present in Chennai and mainly area of Mamlapuram. It is also a very heritage important city. As you can see behind the pic, there is a very important temple also. So एक location ऐसा choose किया गया. एक और importance इस current affairs है, why Mamlapuram was chosen. The reason being, from here only in ancient times there was huge export to China through the trade sea route. So overall it is having the ancient relations with China. So friends, let us start in series. This was the second informal summit between India and China that was held in Mamlapuram in Tamil Nadu, near about Chennai's area. Earlier, it was at the backdrop to the April 2018. As I told you, 2018 के अंदर पहले भी एक informal summit हुआ था वुहान के अंदर, as it is mentioned here. और वहाँ पे देखिए 2014 के बाद से ना कुछ रिलेशंस इंडिया और चाइना के थोड़े से ख़राब हुए थे बिकॉज ऑफ बाउंड्री इश्यूज़. एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू हुआ था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ, जो बाउंड्री लगती है चाइना के साथ, अरुणाचल प्रदेश की. सो ग्रेजुअली उस टाइम पे एक एप्रीहेंशंस आने लगे दोनों कंट्रीज़ के बीच में दैट देयर इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्डशिप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स विद इन द रिलेशंस. सो ग्रेजुअली उस इनफॉर्मल समिट के अंदर एक चीज़ फोकस की दैट वी आर नॉट एडवर्सरीज टू ईच अदर, वी आर गोइंग टू हैव अ हेल्दी कॉम्पिटिशन दैट इज गोइंग टू बी गुड फॉर बोथ द इकोनॉमीज. सो उस समिट के अंदर बोथ द कंट्रीज हैड डिसाइडेड टू अरेस्ट द डिटोरेशन. जो भी रिलेशंस खराब हो रहे थे उनको ठीक करने के लिए बोथ द कंट्रीज हैड फोकस्ड एंड दे अटेम्प्टेड टू स्टार्ट बोथ द रिलेशंस फ्रॉम अ फ्रेश कोर्स. सो ओवरऑल जो वुहान है, द फर्स्ट एंड सेकेंड informal summits, they both acknowledge India and China as not the adversaries, but both are becoming the economic powers in the region also and as well as at the global stage. So overall, both of these countries are going to have a healthy competition in the multipolar world. So एक important aspect है इसका current affair का, that it is having a very important significance from the ancient history also and from international relations. Both the countries are having difference of opinion on certain issues, but still they are trying to have some approach and strategy so as to tackle their relations onto the positive side. So this was the aspect of this current affair. Let us proceed with the series of next current affairs. So the next current affair here we have, that is of non-alignment summit. Friends, non-alignment summit is usually also called as NAM. देखिए जब ये पहली बार हुआ था तब से लेकर आज तक इसकी जो इम्पोर्टेंस है ग्रेजुअली वो उतने लेवल की नहीं रही जितनी पहले थी. देयर आर वेरियस रीजंस आउट ऑफ इट ऑल्सो. फ्रेंड्स, सिंस 1990 दुनिया जो है वो दो पावर ब्लॉक से हटके वन साइडेड हो गया है. बिकॉज 1990 से पहले आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द होल वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप्स. वन वॉज हेडेड बाय यूएसए एंड इट्स एलाइज एंड वन वॉज हेडेड बाय यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. सो इसमें यूजुअली होता क्या था, बोथ ऑफ दीज कंट्रीज वर लीडर्स एंड दुनिया की जितनी भी कंट्रीज थी मैक्सिमम ऑफ देम दे वर आइदर द पार्टनर्स ऑफ यूएसएसआर और आइदर द पार्टनर ऑफ यूएसए.
However, India and some like-minded countries of India at that point of time, during the time of ex-Prime Minister of India Jawaharlal Nehru, बहुत सारी कंट्रीज ने ऐसा सोचा कि neither we are going to be at the side of USA, neither we are going to be at the side of USSR. However, कुछ circumstances आने वाले सालों में ऐसे हुए that India also got the support of other countries out of these two only. So जब ये NAM बना था, NAM का main motive था neither to join the group of USA nor to join the group of Russia, which was earlier USSR. So जो NAM है, it was founded and held its first conference, that was the Belgrade Conference, in the year of 1961 under the leadership of India, Yugoslavia, Egypt, Ghana and Indonesia. So friends, these were the major countries which started its first conference in the year of 1961. However, in the year of 1955, the movement has its origin in the Asia-Africa Conference that was held in Bandung, Indonesia. Indonesia is part and parcel of ASEAN group, that is the neighboring country of Southeast Asia, part of India. So this meeting was held in the 1955, and the importance of Bandung conference is that इस कॉन्फ्रेंस के अंदर 10 प्रिंसिपल्स को फोकस किया गया था, एंड द 10 प्रिंसिपल्स दे वर ऑफ द बैंडंग ओनली. दीज प्रोक्लेम्ड दैट द कॉन्फ्रेंस वर गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नैम. फ्रेंड्स, जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी बैंडंग में, it made the important principles as the provisions for the future meetings of NAM only. So 10 ऐसे principles थे जिनमें एक था neither to align with USA nor to align with USSR, neither to interfere into the issues of other countries. So according to this pattern only, certain other 10 principles were also taken into account. And the recent summit that was held in Baku, that is in Azerbaijan, this is the Central Asian country only, into the borders areas of Russia. So Vice President Mr. Venkaiah Naidu, he was the leader who attended the 18th number of summit. Please learn this, that the summit number was in 18th sense. So 18th number summit was held, that was held in Baku of Azerbaijan. Baku is the capital city of Azerbaijan. So friends, this was the important aspect of the NAM summit. As you can see in the picture here, the Indian Vice President Mr. M. Venkaiah Naidu, he was the leader from Indian side who was present over there, and various issues were also taken into account, and some important decisions were also taken so as to revive this NAM in future. Parallel to this, other countries also who were the members here, they also put up their viewpoints regarding various global issues which are required to be resolved at the earliest, which includes mainly climate and terrorism. I hope friends this is clear. Let us proceed further. So the next current affair here we have, that is of Prakash Portal. Friends, I told you earlier also, in the recent scenario there has been the questions from the government schemes also, certain important portals which have been launched by the government. And in the recent scenario, the Prakash Portal, that is the one that has been launched recently by the government in the October 2019 month. So first of all, there is an important aspect of acronym. As I told you earlier that there was a Pragati acronym based question in 2018. So let us start with this. The Prakash acronym here stands for Power Rail Koila Availability Through Supply Harmony Portal. So friends, this is the acronym of Prakash Portal. Now, this portal aims at bringing better coordination of coal supplies. Major motive of Prakash is to coordinate the coal supplies. So friends, major motive is this only. Coal supplies among all the stakeholders, which includes Ministry of Power, Ministry of Coal and small other stakeholders, which includes the agencies of Government of India only. And it will ensure adequate availability and proper use of coal at the thermal power plants in India. Friends, there are many thermal power plants in India across the pan-Indian states. So in these thermal power plants, there is a huge requirement of coal in the recent scenario, as countries are also focusing on renewable development of energy, but this is part and parcel of non-renewable resources. So the important aspect is the proper, adequate and the optimum use of the coal only. Friends, there is an important aspect that you should know, that which authority has developed it. So friends, NTPC. This has been developed by the NTPC. NTPC stands for National Thermal Power Corporation. So friend, this was the important aspect of this only. As you can see in the picture here, how the coal has been, it is being loaded onto the trucks and it is being transported to some other areas of the neighborhoods.
So friend, this is the important aspect of Prakash Portal. Let us proceed further with the next current affair. Friends, the next current affair here we have is of carbon pricing. देखो जो कार्बन प्राइसिंग है ये एनवायरनमेंट ओरिएंटेड ही है। जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है कंट्रीज़ के अंदर, कार्बन की प्रेजेंस बढ़ रही है, ग्लोबल एमिशंस जो बढ़ रहे हैं कार्बन्स के, सो इट इज़ इम्पैक्टिंग द वर्ल्ड एनवायरनमेंट इन अ वेरी लार्ज मैनर। सो ग्लोबल लेवल पे दुनिया भर के देश जो हैं इसके लिए चिंतित हैं, एंड दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन टू हैव सम स्ट्रेटजीज। एज यू कैन सी बिहाइंड मी इन द पिक्चर, various leaders of different countries, they were present at the United Nations, and the meeting here was chaired by USA only because it is the leader country. So over here in this, carbon pricing एक ऐसा price है, it can be categorized as the carbon tax only. Anywhere, wherever carbon will be exhausted to a large extent, on that there will be a fine. The concerned authority or the concerned organization जो ज़्यादा एमिशन करेगा कार्बन का, दे हैव टू पे द टैक्स ओनली। सो वो कार्बन प्राइसिंग का है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, जो कार्बन प्राइसिंग है वो टन्स के वेट के हिसाब से होगा, एज पर द क्राइटेरिया दैट 1 टन ऑफ कार्बन दैट विल बी रिलीज्ड, सो इट विल बी मेजर्ड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। सो हियर वी हैव दिस कार्बन प्राइसिंग, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट जो कैप्चर करेगा एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। जितनी भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होंगी उनकी मेजरमेंट होगा, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली द कार्बन प्राइसिंग विल बी डन। द कॉस्ट ऑफ एमिशंस जो पब्लिक पे करती है, जैसे कि क्रॉप्स का डैमेज होना, हेल्थ केयर के कॉस्ट जो हीट वेव से हो रहे हैं एंड ड्रॉट से हो रहे हैं, एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू फ्लड्स एंड द राइज इन सी लेवल, एंड दिस इज ऑल्सो लीडिंग टू द टाइज देम टू देयर सोर्सेज थ्रू अ प्राइस, usually in the form of price on the carbon dioxide emitted. So overall, जो कार्बन टैक्स है, इट इज़ लाइक अ कार्बन प्राइस ओनली दैट हैज़ टू बी पेड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे एनवायरनमेंट को। सो प्लीज़ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस इज दैट दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनवायरनमेंट ओनली। Recently in the recent scenario, many news and many current affairs, they are related from the exam point of view, which are very significant. So please ponder over this also. Let us proceed further with the next current affair. So the next current affair here we have is of India's first e-waste clinic. Friends, this is also very important from the environment sector only. इंडिया के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल है जो पहला ऐसा e-waste clinic बनाने जा रहा है। As you can see this picture, 2 boxes are there. Here segregation of waste will be there, which includes the electronic waste also along with others. So the major objective is to enable the segregation, processing and disposal of the waste from the households and the commercial units. So this is the major objective. जितने भी घर हैं और commercial units हैं, जो भी वहाँ पे waste होगा उसको अलग अलग करके अलग अलग boxes में डाला जाएगा, जिसमें that is your segregation, फिर उसकी processing होगी, and finally जो भी उनमें से dispose of हो सकता है that will be disposed of accordingly. And for the first time, Bhopal Municipal Corporation, that is BMC, and the Central Pollution Control Board, they both have signed an agreement to set up the country's first ever e-waste clinic at Bhopal in Madhya Pradesh. ये देश के अंदर पहला एक ऐसा स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जितने भी कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, इनका जो बैटरी यूसेज है एक टाइम होने के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है, इट इज़ ऑल्सो थ्रोन इनटू द डस्टबिन्स ओनली, बट ग्रेजुअली कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है किसी ना किसी तरीके से। नाउ जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इट विल बी कलेक्टेड डोर टू डोर। प्लीज़ सी दिस, घर घर जाकर यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कलेक्ट किया जाएगा एंड इट विल बी डिपॉजिटेड डायरेक्टली एट द क्लिनिक। जो क्लिनिक भोपाल के अंदर बनाया जा रहा है वहाँ पे डायरेक्टली उसको डिपॉजिट किया जाएगा in exchange for a fee. Please mind this, these people have to pay some fee also. Now it is a statutory organization that was constituted under some act. Please learn this act also. The act is of Water Prevention and Control of Pollution Act. The year is 1974. So 1974 का जो Water Prevention and Control of Pollution Act है, उसके दायरे के अंदर ही जो आपका ई-वेस्ट क्लिनिक है इसको बनाया जा रहा है। So important aspect is that it is the first of its kind. In case this is going to be very successful, so overall आने वाले टाइम से हमारी कंट्री के अंदर और स्टेट्स की और सिटीज़ के अंदर भी there is a possibility these kinds of clinics will be started. So friends, I hope that these were the important aspects of the news that might have helped you out.
Now please, you can comment into the comment box regarding whichever current affair that you have liked the most, and please do share your opinion regarding any current affairs of the society that you want. We'll be making this separate video for that also. Please do subscribe, like and share CIZ if you like this. Thank you for watching.